let's see the law of tangents. For any triangle ABC, the law of tangents looks like this. Again, हमारे पास इसके 3 versions हैं because we're going through all sides and angles. So let's see how we get this equation. हम sine law already पढ़ चुके हैं. So if you want to revise it, you can go back to that video and watch it again. We know that A upon sine alpha equals B upon sine beta. अगर हम इसको थोड़ा rearrange करते हैं, we get what? A upon B equals sine alpha over sine beta. यहाँ हम componendo dividendo use करेंगे. Let me remind you what componendo dividendo really quickly. अगर हमारे पास 2 equal ratios हैं, तो componendo dividendo के जरिए हम दोनों sides पे numerators और denominators के sum और difference के ratio को equate कर सकते हैं. यानी we can write A minus B upon A plus B equals sine alpha minus sine beta upon sine alpha plus sine beta. अब हम sine की product sum identities use करेंगे. You can go back to chapter 10 to revise these. So right hand side पे numerator और denominator को हम in expression से replace कर देते हैं. Now let's try and simplify this. पहले तो ये दोनों 2's cancel हो जाएंगे.